Acha, growing up in Pakistan, you have had sort of like, you had this intersectional identity where being a woman, of course, like that comes with some of the challenges that you just mentioned about. Then also like coming from a minority. Just tell us like how the combination of these two things, it was challenging for you, or किस किस्म के challenges you have like faced. I think I come from a lot of privilege as compared to a very large majority of many people who grew up in minority communities. So I was very fortunate that my parents had the foresight to put me in an English medium school. I think they realized from a young age that this person has some potential and let's not waste that. So अपनी उनकी जितनी भी कैपेसिटी थी अपनी अर्निंग्स के अंदर रहते हुए अपनी चादर में पैर फैलाते हुए they put me in a decent enough school. I got a decent enough education. I grew up in circles जहाँ पे overly discrimination नहीं हुआ करती थी. I made friends जहाँ पे मुझे discrimination का इतना कोई सीन नहीं होता था. I had opportunities, kindness, like I was saying, people like other people opening up doors for you. I think it's just we don't ever value it. Hard work is of course very important, and of course I did a lot of hard work to be where I am today, but none of this would have been possible if it wasn't for one person or the other holding my hand somewhere along the ladder and helping me climb from this place to this place. It could be small things like referring somebody, writing a reference letter for someone. It could be ऐसी इन पासिंग किसी से बात कर ली हो, आई वॉज थिंकिंग इफ़ यू हैव दिस ओपनिंग, आई हैव दिस वेरी स्मार्ट पर्सन, हाउ अबाउट यू इंटरव्यू दैम. इट कुड बी समथिंग लाइक दैट, और इट कुड जस्ट बी एज सिंपल एज ये जॉब ओपनिंग है, आई थिंक यू आर परफेक्ट फॉर इट, व्हाई डोंट यू अप्लाई. सो अलॉन्ग द वे ज़िंदगी में जो भी कोई सक्सेसफुल है वो अपने हार्डवर्क से तो है ही है, बट आप कभी ऐसे नहीं कह सकते कि 100% सिर्फ अपनी एबिलिटी पे है. सो पीपल हैव बिन काइंड ऑल अलॉन्ग, and people have been taking me along with them on journeys. I think it's just all this kindness of people and friends and people who saw potential in me. जो मैं एक middle class underprivileged family से उठ के अमेरिका में पढ़ के एक बड़े इदारों में काम करते करते बड़े इदारे में वापस आ गई हूँ काम करने. So I have been privileged in that sense कि I have an education. I speak fluent English, nothing to be proud of. This is of course our colonial identity कि हमें English को बहुत value करना है. So मेरी education अच्छी है, English decent बोल लेती हूँ, English decent लिख लेती हूँ, तो somehow all of these things sort of like work in my favor. Of course there are things that have been challenges. Of course I come from a minority community, let's never forget that. I am a woman, and then you add this added drawback or barrier of my skin being darker than most people, and उसके ऊपर मैं एक लड़की हूँ. So like you can imagine what this country does to people who are dark skinned. So मैं अगर minority community से ना भी होती और मेरा रंग ऐसा होता तो भी मुझे मसले मसाइल होने थे. सो थैंकफुली द कलर ऑफ माई स्किन हैज़ नेवर बीन अ प्रॉब्लम एनीवेयर. इट्स जस्ट दैट सोशली होता है आपको एक सोशली ड्रॉबैक होता है कि पीपल मेक यू फील इन्फीरियर कि ओ तुम फलानी फेयर एंड लवली लगा लो और फलानी आची क्रीम लगा लो तो पता नहीं तुम्हें 10 दूल्हा मिल जाएंगे. दैट्स नॉट माई गोल इन लाइफ एट ऑल. सो एक डिसेंट दूल्हा इज़ हार्ड इनफ टू फाइंड. सो 10 तो किसी को नहीं मिलने वाले.